जिन सेंटर्स पे आप काम करते हो वो तो इन पेशेंट रिहैब सेंटर है और उसमें ओपीडी भी है, तो इन पेशेंट रिहैब सेंटर का रोल कहाँ पे आता है इन रिहैबिलिटेशन? So, especially when stroke has happened, or any spinal cord injury, traumatic brain injury, an acute condition has happened, and patient is recovering from that. So, initially, first 3 to 6 months is a golden period where maximum recovery can happen. So, that is the time we should do as much therapy, as much rehabilitation efforts as possible. Because after 6 months, recovery plateaus. So, that is the golden time for promoting the functional independence. Patient requires occupational therapy, patient requires speech and swallow therapy, patient requires psychology counseling sessions, patient requires monitoring of his nutrition, patient requires monitoring of his cognitions. So for all that, first of all, supervision is required. So I primarily admit patient so that they can stay admitted under my supervision, and whatever medication change is required. There are certain medications which can help in improving the consciousness, which can help in improving the spasticity, which can help in reducing the pain. When the patient is doing the therapy, there is a lot of number of complications can happen. So to tackle all that complication, it has to be monitored under rehab nursing care. It has to be monitored under proper EMR doctor supervision. So that is when the role of inpatient facility for rehabilitation is very essential. मैं जो समझ पाया हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ क्योंकि आपको इतने सारे थेरेपिस्ट के साथ इतने सारे सेशंस करने हैं ताकि वो गोल्डन पीरियड के अंदर आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, और इस समय आपको एक फिजिकल मेडिसिन और रिहैब स्पेशलिस्ट की सुपरविजन भी चाहिए, और आपको वो सारे कॉम्प्लिकेशंस से भी मुक्त होना है जो घर जाके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग केयर भी उतनी अच्छी है, राइट? तो इन सब के लिए बेटर है कि इन पेशेंट फिजिकल रिहैब के साथ रह के आप इलाज कराएं ताकि आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो रिकवरी में जाए।